Hi, good evening, everyone. This is Shefali Singla, and in the session, we are going to discuss next application of dynamic programming, that is traveling salesman problem. Already we have covered three applications from dynamic programming. So this is the next one. Uh, if you have any doubt in the previous session, अगर पिछली कोई भी application में doubt है आप पूछ सकते हो. You can write your doubts in the chat section. I'll read your doubts and definitely I'll try to solve it. Okay, so traveling salesman problem basically is nothing but this is kind of finding an Euler graph or Euler path. तो अगर हम Euler की बात करते हैं, now question arises is what is this Euler path? Euler path बच्चे basically होते हैं जब आपके पास exactly हर एक vertex को हम एक ही बार visit करते हैं and the goal is to visit each and every vertex. Okay, तो यूलर में हम एक एज को एक ही बार कवर करते हैं, जबकि हैमिल्टोनियन में हमारा फोकस वर्टेक्स के ऊपर होता है. दैट मींस इन हैमिल्टोनियन विल विजिट ईच एंड एवरी वर्टेक्स एग्जैक्टली once. Hamiltonian means every vertex will be covered exactly once, whereas in case of Euler, every edge is covered exactly once. Now, if we talk about traveling salesman problem, आप इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि there are few cities और एक सेल्समैन है जिसको हर सिटी में जाके सेल्स को प्रमोट करना है. ओके, तो आइडिया क्या होगा? It has to cover all the cities. अगर हम ग्राफ की बात करते हैं, what these cities will be representing? It will be representing the verses. For example, there are four cities A, B, C and D. Definitely there will be some path from A to B, A to C, A to D, B to D, D to B, and like this there will be the paths given to you. तो हर पाथ की कुछ ना कुछ पाथ लेंथ होगी, बिकॉज हर सिटी का डिस्टेंस एक सिटी से दूसरी सिटी सेम नहीं हो सकता. सो यू विल बी गिवन हियर विद द एज वेट्स. आपको डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा, एज वेट्स गिवन होंगे, एंड द गोल इज कि एक सेल्समैन अपने हेड ऑफिस वाली सिटी से स्टार्ट करे. इट हैज टू विजिट ऑल द सिटीज एंड इट हैज टू कम बैक टू द मेन ऑफिस. यानी कि जिस वर्टेक्स से स्टार्ट किया घूम फिर कर उसी वर्टेक्स पे आने, और एक सिटी को बार बार विजिट करने का कोई फायदा नहीं है. सो ईच एंड एवरी सिटी विल बी कवर्ड एग्जैक्टली वंस. तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं इन द ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम each and every vertex will be covered exactly once. So this means that the concept of traveling salesman problem is based on Euler, it's based on Hamiltonian. Because in Hamiltonian, every vertex will be covered exactly once. So this is based on Hamiltonian tour. The idea is to cover each and every vertex of the graph exactly once. Very good evening, Kanchan. Ye clear hua? So covering all the vertices exactly once. So for example, if A is visited, or let's assume that A is the source vertex. Agar A source vertex hai, then it might be going to B, then to C, then to A, and it has to return back to the head office. Or if it's starting from A, उसके बाद ये C पे जा सकते हैं, then it may go to D, then it might be going to B, and then coming back to A. Other path could be A, then going to B, then going to D, then going to C, then going to A. So n number of paths are available. Goal is to find out a path. हमें एक ऐसा path find करना है जिसमें cost सबसे कम हो. Goal is to find the minimum cost. यानी कि इस तरीके से ट्रिप को प्लान करना है कि सारी सिटीज भी कवर हो जाए और कॉस्ट भी कम हो. ओके, ये क्लियर हुआ? So we know that Hamiltonian cycle or Hamiltonian graph, or finding the Hamiltonian
path is a NP complete problem. So same goes with the traveling salesman problem. Traveling salesman problem is also a NP complete problem. That means no polynomial time solution exists for the same. Dynamic programming के साथ भी हम different calls करके देखेंगे and then we'll analyze the time complexity. Again, we'll be discussing the applications. जैसे हमने बाकी dynamic programming के applications cover किए हैं, उसी तरीके से traveling salesman problem में भी question करेंगे. With the help of the question, we'll understand the concept and then we'll be writing the reconciliation. Because मैंने आपको पहले भी बताया है, डायनामिक प्रोग्रामिंग से रेफरेंस रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द एप्लीकेशंस. ओके, क्योंकि डायनामिक प्रोग्रामिंग है तो एप्लीकेशंस पे टाइम ज्यादा लग सकता है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो ज्यादातर आए हैं दोज आर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, बट वी कैन नॉट स्किप एनी पार्ट. You have to cover each and every application. You have to be comfortable with the reconciliation. If you are comfortable with the reconciliation, easily you can get the answers for the application based questions. इज दिस इंट्रोडक्शन क्लियर? तो इस इंट्रोडक्शन में अभी तक हमने यही डिस्कस किए कि जो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है दैट इज बेस्ड ऑन द हैमिल्टोनियन टूर which is a NP complete problem. Hamiltonian means every vertex of a graph will be covered exactly once. Euler होता है जहाँ पे edge exactly once cover होती है, but goal here is to visit all the cities. Traveling salesman का काम है कि सारी cities को visit करना है, तो definitely here will be focusing on finding the Hamiltonian साइकिल और हैमिल्टोनियन सर्किट. साइकिल या सर्किट क्यों बोल रही हो? अगर आपके पास एक के बाद एक वर्सेस आते हैं उसको हम बोलते हैं पाथ. ओके, फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग ए बी सी डी, सो दिस इज अ पाथ. Circuit होता है when you are starting from the point where you are ending, or we can say that it's a path. Circuit is nothing but it's a path. It's a path. अगर हैमिल्टोनियन की बात हो रही है तो उस पाथ में सारे वर्सेस आने चाहिए. पाथ वेयर स्टार्टिंग वर्टेक्स इज इक्वल टू द एंडिंग वर्टेक्स. मतलब जिस वर्टेक्स से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी वर्टेक्स पे एंड कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन साइकिल और सर्किट. मेक सेंस? So now this graph can be given to you in the diagrammatical format, or it might be given to you in the form of the adjacency matrix. So we have different representations for the graph. One is the list representation and the adjacency matrix representation. Adjacency matrix basically gives you the values of the path lengths. मतलब it will indicate that कौन सी वर्टेक्स कौन सी दूसरी वर्सेस से एडजेसेंट है, किससे जुड़ी हुई है, एंड विद द एज वैल्यू कितनी पाथ लेंथ है. सो आई एम गोइंग टू कंसिडर द ग्राफ इन द फॉर्म ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. सो अगर पाथ लेंथ गिवन है तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स. कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स. आइडिया क्लियर हुआ कि ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में क्या करना है? आइडिया इज टू विजिट ईच एंड एवरी वर्टेक्स बाय फाइंडिंग द मिनिमम कॉस्ट. ओके, एक ट्रिप प्लान करना है विद द मिनिमम कॉस्ट. सो यू आर गिवन विद द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. आई एम assuming that there are four verses A, B, C, D or 1, 2, 3. So same city का distance 1, 2, 3, 4. आप A, B, C, D बोल लो और 1, 2, 3, 4 बोल लो. So this is 1, 2, 3, 4. सेम सिटी में जाने के लिए द डिस्टेंस और द कॉस्ट इज 0. 1 से 1 में जाना है, दैट इज 0. वेरी गुड इवनिंग प्रशांत. ओके, 1 to 2 is 10. 1 से 3 पे जाना है 15. 1 to 4 जाना है, it is 20. 2 to 1 जाना है, this is 5, 6 and 8. So like this some graph is given to you. 2 to 2 distance is 0. 3 to 3 distance is 0. 4 to 4 distance is 0. 9, 10, 13, 12, 8 and 9. So this is the path
दिस इज द कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स गिवन टू यू, ऑल्दो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 1 से 2 जाने के लिए इट इज टेकिंग 10 और 2 से 1 आने के लिए इट इज, दिस इज द वर्टेक्स 1 एंड 2। अगर आपको सिटी 1 से सिटी 2 पे जाना है तो इसके लिए कॉस्ट है 1 to 2 is 10 और 2 से 1 आने के लिए दिस इज 5। ओके कोई हो सकता है कि शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल हो फ्रॉम 2 to 1, तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। तो आपको ये वैल्यूज देखनी होंगी 1 to 2 and 2 to 1, इज दिस द सेम, इज द एडजेसेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक और नॉट। इस केस में सिमेट्रिक नहीं है। Okay, so we have to find out the traveling salesman problem. I'm assuming that A is the starting vertex or 1 is the starting vertex. मैं 1 से start कर रही हूँ। I'm assuming that head office is in 1, in city 1. आइडिया क्लियर हुआ? प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या फाइंड करना है? सो अगर हमने ये बोला है आपके पास टोटल सेट ऑफ वर्ड्सेस का सेट क्या कंटेन कर रहा है? इट इज कंटेनिंग 1 2 3 4, टोटल 4 सिटीज हैं, उनमें से 1 इज द सोर्स वर्टेक्स। तो 1 से शुरू करके कितनी ऑप्शंस है, आप कौन कौन सी सिटी पे जा सकते हो? इज देयर एनी अदर ऑप्शन, इज देयर एनी ऑप्शंस अवेलेबल? 1 पे हो, अभी आपको 2 3 और 4 विजिट करना है, दैट मीन्स वी कैन गो टू ईदर ऑफ द सिटी फर्स्ट। पहले 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं, 1 से 4 पे भी जा सकते हैं। बेसिकली वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल द पाथ्स। सो अगर मैं यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल लिख रही हूँ, वी आर ऑन सम वर्टेक्स एस, तो रिमेनिंग वर्ड्स कौन से होंगे जो विजिट करने हैं? इट इज 2 3 4। सो आई कैन से दैट जो प्रॉपर वर्टेक्स का सेट था उसमें से मैंने S को माइनस कर दिया। These are the cities to be visited. Okay, तो ये फंक्शन कॉल रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड, मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम, required to go from S to other remaining verses, other remaining verses of the graph. Just give me a minute. Need to put my laptop on charging. Just give me a minute. Okay. So minimum cost required to go from S to other verses. I hope I'm visible. Okay. To other remaining verses V exactly once. जितनी भी बाकी verses हैं उनको एक ही बार visit करना है exactly once and returning back to vertex S. That was the source vertex. तो अब यहाँ पे अगर हम इस एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं, वी आर गेटिंग हियर ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सोर्स वर्टेक्स इज 1। इसके अलावा वर्टेक्स सेट में आपके पास 4 वर्सेस थी जिसमें से 1 निकल गया, तो बाकी और कौन कौन सी वर्टेक्स को विजिट करने हैं? 2 3 एंड 4। 2 3 एंड 4 आर द रिमेनिंग वर्सेस। इसका मतलब हम पहले 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे जा सकते हैं, 1 से 4 पे जा सकते हैं। यही 4 ऑप्शंस है। सो विल कंसिडर द कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम vertex 1 to 2, cost of going from vertex 1 to 3, 1 से आप तीनों में से किसी भी वर्टेक्स पे पहले जा सकते हो। अगर 1 से 2 पे गए, मान लो 1 से 2 पे आ गए, इसका मतलब क्या? करंटली वी आर ऑन वर्टेक्स 2 और बाकी के और कौन कौन से वर्टेक्स विजिट करने? 3 and 4। सो आई विल बी मेकिंग अ सेम फंक्शन कॉल्ड TSP 2। करंटली वी आर ऑन वर्टेक्स 2 क्योंकि जब आपने एज को कंसिडर किया 1 से 2 वाली, तो आप 2 पे पहुंच गए। बाकी और कौन कौन से वर्टेक्स विजिट करने हैं? 3 and 4। सो
3 and 4 are the remaining verses. Plus traveling salesman problem, TSP, 1 से 3 पे गए तो currently we are on 3. अब जब 3 पे पहुंच गए, remaining verses are 2 and 4. Remaining verses are 2 and 4. If we are going from 1 to 4, 1 to 4 pe gaye, so remaining verses are 2 and 3. So I'll be taking TSP. Currently we are on vertex 4 and the remaining verses are 2 and 3. So there are 3 options available. अगर city 1 पे हो तो वहां से 3 options available है. पहले 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं. And ultimately we have to get the minimum cost. ये clear हुआ? Okay. तो इस तरीके से सारी कॉल्स को एक्सपैंड कर लेंगे. डायनामिक प्रोग्रामिंग और रिकर्सिव स्टेटमेंट का मतलब यही है, जो भी आपके पास रिकर्सिव स्टेटमेंट आ रही है, जस्ट सॉल्व इट. सो हियर आई एम गेटिंग, लेट मी रिमूव दिस, इसको हटा देते हैं क्योंकि इस स्लाइड पे वी डोंट हैव इनफ स्पेस और थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन कॉल्स आ रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट कॉल विल बी फॉर टीएसपी. अब हमें इस रिकर्सिव कॉल को सॉल्व करना है, सो इट विल बी टीएसपी 2 3,4. यानी कि 2 पे आप पहुंच चुके हो, 3 और 4 रिमेनिंग वर्सेस है जो आपको विजिट करनी है. दैट मींस पहले 2 से 3 पे भी जा सकते हैं, 2 से 4 पे भी आ सकते हैं. सो 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल. विल कंसिडर द कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 2 to 3 और कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 2 to 4. अगर 3 को विजिट किया, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 4, सो विल बी मेकिंग अ कॉल. जब 2 से 3 पे आए, इसका मतलब करंट वर्टेक्स इज 3, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 4. Current vertex is 4, remaining vertex is 3. दो options available है, तो that means we need to consider the minimum value. फिर से आपके पास कॉल आई TSP 3,4. यानी कि 4 एक वर्टेक्स बचा है जिसको आपने विजिट करना है. सो कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 3 to 4. अब रिमेनिंग वर्टेक्स क्या है? दैट इज ओवर. यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन है, फर्स्ट टाइम आ रही है इसलिए मैं फंक्शन कॉल लिख रही हूँ, अदरवाइज डायरेक्टली विल रिटर्न द वैल्यू. TSP 4 और कोई और वर्टेक्स बची ही नहीं विजिट करने के लिए. तो इसका मतलब ये जो कॉल है, दिस विल बी बिहेविंग एज अ टर्मिनेशन कंडीशन. क्यों टर्मिनेशन कंडीशन बोल रहे हैं? जब आपने सारी वर्सेस को विजिट कर लिया, कोई और वर्टेक्स बची ही नहीं, तो डेफिनेटली इट हैज टू रिटर्न बैक. सारी सिटीज कवर कर ली, अब वापस अपने घर जाओ. सो TSP 4,5, this is behaving as a termination condition. तो ये क्या करेगा? किसकी कॉस्ट कंसिडर करेगा? जिस सिटी में है होम और स्टार्टिंग 1 is 1, तो इट विल टेक द कॉस्ट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 4 to 1. तो इसका मतलब हमें टर्मिनेशन कंडीशन समझ में आ गई. जब सेकेंड पार्ट में रिमेनिंग वर्टेक्स बिकम्स 5, सो इट विल बी रिटर्निंग बैक टू द स्टार्टिंग सिटी. ओके, तो जहां पे आपके पास 5 आ रहा हो, कोई वर्टेक्स नहीं बचे, डायरेक्टली यू कैन रिप्लेस इट. Similarly, we'll be getting a call for TSP. तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ TSP 4,3. तो इसका मतलब आपको किसकी कॉस्ट लेनी है? 4 से 3 पे जाना है. अब और कोई वर्टेक्स बचा नहीं, तो डायरेक्टली व्हाट आई विल बी डूइंग इज कंसिडर द कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 3 to 3 पे पहुंच चुके, अब 3 से वापस 1 पे आ जाओ. तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, ये क्लियर हुआ? अब फंक्शंस की वैल्यूज को रिटर्न करने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यूज रिटर्न करेंगे. कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 जाने के लिए कॉस्ट इज 9. 2 से 4 जाने के लिए कॉस्ट इज 10. TSP 3,4, कॉस्ट ऑफ 3 to 4, थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम, दिस इज 12. 4,1 is 8. यानी कि यहाँ पे वैल्यू 8 रिटर्न हुई, दिस इज रिटर्निंग 8, सो 8 is returned here. 12 plus 8 is 20, यानी कि 3,4 की वैल्यू 20 आ गई and 20 is returned here. 9 plus 20 is 29. Take the next one, TSP 4,3, substitute the values. Fourth row and third column value is 9. 3,1, third row, first column value is 6. 9 plus 6 is 15. So 15 value is returned for 4,3. 10 plus 15 is 25.
हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, दोनों की मिनिमम वैल्यू है 25. So 25 will be returned here. 1 to 2, cost of going from 1 to 2, first row and second column, this is 10. First row, third column, 15. First row, fourth column, 20. 10 plus 25 is 35. तो इसी तरीके से हम बाकी दो फंक्शन कॉल्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड अल्टीमेटली विल एंड अप बाय गेटिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट? समझ में आया कैसे फंक्शन कॉल्स आएंगे? सो विल फिनिश इट ऑफ एंड आफ्टर दैट विल बी राइटिंग अ रेकरेंस रिलेशन. ये क्लियर हुआ? तो इसके बाद फटाफट से कॉल्स ले सकते. सो नेक्स्ट वन इज टीएसपी. अब हमें इस कॉल को इलेबोरेट करने. 3, 2, 4 यानी कि दो ऑप्शंस है. Cost of going from 3 to 2 or cost of going from 3 to 4 plus TSP. Currently we are on vertex 2. 2 पे है, remaining vertex is 4. Remaining vertex is 4 plus TSP. अगर पहले 4 को विजिट किए, दो cities विजिट करने रहते थे, 4 को विजिट कर लिया, so remaining one is 2. करेक्ट? क्योंकि दो ऑप्शंस आ रही हैं तो हमें मिनिमम वैल्यू कंसिडर करनी है. Elaborated TSP 2, 4. TSP, आई गेस मेरी इमेज बीच में आ रही है, तो अगर क्लियर हो गया तो इसको फटाफट लिख सकते हैं. TSP 2, 4 will be equal to cost of 2 to 4 plus cost of, क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन आ गई, cost of 4 to 1. TSP 4, 2 एक ही वर्टेक्स रहता है, सो इट विल बी गोइंग फ्रॉम 4 to 2. सारे वर्टेक्स कवर हो गए. कॉस्ट ऑफ रिटर्निंग बैक टू द सेम स्टार्टिंग सिटी. सारी कॉल्स आ गई. नेक्स्ट वन इज TSP. Here will be getting 4, 2 to 3. That will be taking cost from 4 to 2 plus TSP currently in the city 2 and remaining is 3. Cost of going from 4 to 3, remaining one is 3 to 2. दो ऑप्शंस आ रही है, so we'll be taking the minimum value. Now elaborated TSP 2, 3. So that will be returning cost of 2 to 3. सारे वर्टेक्स ओवर हो गए, so cost of 3 to 1. TSP 3 to 2. तो यहाँ पे क्या आएगा? It will be cost of 3 to 2 plus cost of, कोई और वर्टेक्स नहीं बचा तो वापस आ जाओ. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें. Cost of 3 to 2, third row and second column. Third row and second column, this is 13. Cost of 3 to 4, third row and fourth column, this is 12. 2 to 4, we have to elaborate it. 2 to 4 is 10. 4 to 1 is 8. तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 18, so 18 is returned here. 2 to 4 value is 18. Next, cost of, सारी फंक्शन कॉल सही आई है तो उसके बाद सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. Cost of 4 to 2, cost of 4 to 2 is 8. Cost of 2 to 1 is 5. So this is returning 13. So 13 value will be returned to 4, 2. Sum ले लो. 13 plus 18 is 31 and 12 plus 13 comes out to be 25. Minimum value 25 hai, so 25 will be returned here. I know that space is less, but I'm just substituting the values. Okay. So 4, 2, 3 की value बताओगे. What is the value? So here we are getting 8. 4 to 3 is 9.
TSP 2 comma 3, cost of 2 to 3 is 9 and 3 to 1 is 6. 9 plus 6 is 15. So 15 value is returned here. 15. अंडरस्टूड तो ठीक है, आंसर बताना है आपको, मुझे क्वेश्चन तो खत्म करना है. 3 to 2 is 13, 2 to 1 is 5, so it comes out to be 18. So 18 value will be returned here. 8 plus 15 is 23, 18 plus 9 is 27. So minimum is 23. Minimum is 23, so 23 value हम return कर देंगे. तो finally आपके पास values क्या आ रही है? For 3, 2, 4, we are getting the value 25. For 4, 2, 3, we are getting the value 23. 15 plus 25, this is 15 plus 25, that comes out to be 40. 20 plus 23, 20 plus 23, this comes out to be 43. So what is the minimum value? Minimum value is 35. So 35 is the answer for this question. अगर आपको पाथ आइडेंटिफाई करना है कौन से पाथ से मिनिमम वैल्यू आई, तो 35 आया. ये कहां से आया है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज वेंट फ्रॉम 1 to 2. उसके बाद कॉल क्या थे इसमें? 2, 3, 4. गो टू द फंक्शन कॉल वेयर वी हैव इलेबोरेटेड दिस 2, 3, 4. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इज 25. 25 कौन से पाथ ने रिटर्न किए? 2 से ये कहां पे गया? 4 पे. देन 4 to 3 एंड देन 3 to 1. तो इस तरीके से आप पाथ भी एक्सप्लोर कर सकते हो कौन से पाथ से मिनिमम वैल्यू आ रही है. सो 1 to 2 इज 10, 2 to 4, 2 to 4 is 10, 4 to 3 is 9, and 3 to 1 is 6. So you can take the sum 10 plus 10, 20, 29 plus 6 is 35. So this is the smallest path. Okay. So basically this is the concept of the traveling salesman problem. आप सबको समझ आ चुका है तो फटाफट से reference relation लिखते हैं and after that I'll be giving you one practice question. आपको आंसर बताना है और फिर सेशन खत्म. ओके? किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर समझ में आ गया तो आप रेफरेंस रिलेशन रिटर्न कर सकते हो. गाइज आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. यू नीड नॉट टू टेक दीज नोट्स बिकॉज एनी हाउ आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द टेलीग्राम ग्रुप. यू नो दैट डेली आपको पीडीएफ मिलती है एंड दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप दैट इज शेफाली मैम टेस्ट बुक. यस. So you'll get the PDF of all the YouTube sessions and the Telegram group which is Shefali Ma'am Testbook. अगर ग्रुप नहीं मिलता है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर थर्ड लिंक को फॉलो कर सकते हो. थर्ड लिंक includes third link is the link for the Telegram group. Apart from that you can participate in the discussions. अगर कुछ doubts है तो आप पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हो, or you can directly interact with me. You can participate in the quiz and the poll. This much long calculation we have to do. See, मैंने अभी क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए, that's why it looks like कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बट इतना टाइम नहीं लगता है. See, dynamic programming है तो obviously we cannot apply any shortcut. Dynamic programming क्या बोलता है? We have to consider each and every possible path. पहली चीज, एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. अगर आएगा क्वेश्चन, अगर आपको आता है इस टाइप का क्वेश्चन तो फर्स्ट इंस्टेंस में आप स्किप कर दोगे टू सॉल्व इट लेटर. ओके? क्योंकि अगर मान लो स्टार्टिंग में कहीं पे आ गया 25th क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस जो लेंथी है, आपको आता है बट उसमें टाइम ज्यादा ना गवाकर आप पहले बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे. एनी हाउ जब पेपर आ रहा होगा आई डिस्कस दीज ट्रिक्स हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, किस तरीके से आप इफेक्टिवली पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो. ओके? सो डोंट वरी अबाउट दैट. मोर ओवर कितना भी लेंथी प्रोसेस हो, इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट आता है तो फटाफट से आप चीजों को मैनेज कर लेते हो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली दैट विल बी टेकिंग लेस टाइम.
एंड एक ट्री बनाएंगे. डेफिनेटली विल डिस्कस द स्मॉलेस्ट मेथड. ओके. All right. So, traveling salesman problem, recurrence relation. Recurrence relation क्या होगा इसका? अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप recurrence relation रिटर्न कर सकते हो. What will be the recurrence relation? I'm making a call to traveling salesman problem. और हमने ये बोला है हमारे पास एक source vertex है, source vertex and कुछ remaining vertices है. What is V dash? V dash में हमने ये बोला है V dash is nothing but it's a set of all the vertices. V is representing the set of all the vertices. V dash is some vertex to be visited. Or let me say, set of the vertices set of remaining vertices. Okay, this is K. Or V minus S. So V dash is representing the set of remaining vertices, where V is representing the set of all the vertices. हमने ये बोला था कि हमारे पास 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4, और S is the source vertex, that is 1. तो आपके पास कॉल क्या आई थी? 1 2 source vertex to 2 3 4 set V में से आपने 1 को निकाल दिया था. So S is representing the source vertex. Source vertex. So what will be the recursive call? आपको दो स्टेटमेंट्स मेंशन करनी है, टर्मिनेशन कंडीशन एंड द रिकर्सिव स्टेटमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्मिनेशन कंडीशन. इफ v dash is equal to 5, यानी कि कोई और वर्टेक्स नहीं बचती विजिट करने के लिए, then in that case we'll be taking the cost from s to the source vertex. Okay, s to the source vertex. तो अगर हम s को source, this is the source vertex, s is the current vertex. Otherwise, recursive statement. Otherwise. Otherwise means we are talking about the recursive statement. Recursive statement क्या है? आपको v dash की हर एक vertex पे जाना है. We need to consider the vertex cost of s to k. What is this k? K is for all the values of k. K belongs to v dash. अगर v dash में आपके पास 1 2 3 और 2 3 4 आ रहा है तो इसका मतलब हर एक वर्टेक्स पे आपको जाना है. सो दैट इज k belongs to, for all the values of v dash there is some vertex k. Once you have reached to k, जब आप k पे पहुंच गए, that means currently you are in city k, so we have to make a same call k. बाकी रिमेनिंग वर्सेस कौन से होंगे? v dash में से k निकल गया, so remaining vertex will be v dash minus k. करेक्ट, ऐसे कॉल किए. एंड जितनी भी आपके पास ऑप्शंस आएंगी, वी हैव टू टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑल. और ये कॉस्ट कब कंसिडर कर सकते हैं? कॉस्ट ऑफ एस टू के हम तभी बता सकते हैं अगर यहाँ पे एज एग्जिस्ट करेगा. सो देयर इज सम एज बिटवीन एस एंड के. ओके, एस और के के बीच में कॉस्ट तभी आएगी अगर ये आपस में एडजेसेंट होंगे. देयर इज द वैल्यू अवेलेबल इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स. Is this clear? Is this clear? So we have provided the termination condition. We have provided the recursive statement. This is the termination condition. Anyone having any doubt? तो recursive statement में हमें दो ही चीजें mention करनी होती है. Recursive
termination condition and the recursive statement. Termination condition means if there is no more vertex to be visited, तो वापस से हमें cost कहाँ तक की लेनी है? Source vertex, like I had elaborated here. यहाँ पे हमने elaborate किया था, अगर यहाँ पे phi आ जाता है, there is no remaining vertex to be visited, तो वापस से ये source vertex पे जाएगा. Okay? So this is the reconciliation. अगर हम यहाँ से tree बनाने की कोशिश करें, recursive tree, let's see, we'll be getting the different function calls, or the repeated function calls will be there. सबसे पहले आपने 1 को visit किया. So I'm taking the same example. TSP, हमारे पास option थी 1 is the source vertex, और मुझे जाना है 2, 3 और 4 पे. तो कितने पाथ बन रहे? 1 से स्टार्ट करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू 2, अदर ऑप्शन इज गोइंग टू 3, अदर ऑप्शन इज 1 से 4 पे जाओ. 1 से 2 पे आए तो रिमेनिंग वर्सेस आर 3 एंड 4, यानी कि 2 के बाद आपके पास दो पाथ बनेंगे गोइंग फ्रॉम 2 to 3, 2 to 4. 3 अगर विजिट किया, रिमेनिंग वर्सेस आर 2 and 4. अगर 1 के बाद 4 विजिट किया तो रिमेनिंग वर्सेस आर 2 and 3. अगर हम फर्स्ट पाथ की बात करते हैं, 1 को विजिट किया, फिर 2 को विजिट किया, देन वी आर गेटिंग 3, यानी कि रिमेनिंग वर्टेक्स इज 4, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 3, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 4, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 2, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 3, रिमेनिंग वर्टेक्स इज 2. चारों vertex आ गए 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4. So I have got all the possible calls, और यहाँ पे सारे vertex visit हो चुके हैं. So ultimately it will end at vertex 1. It will end at vertex 1. It will end at vertex 1, vertex 1, vertex 1, because 1 is a source vertex. Cost ले लो आप. Adjacency matrix, I'm considering the example. So we were given with the adjacency matrix. What was that? Adjacency matrix was given. So this is for 1 2 3 4, 1 2 3 4. So it was 10, 15 and 20. Then is 5, 6 and 8, 8 and 9, 0, 10 and 12. This value was 0, this value was 0, 9 and 12, 30. Correct? अब आपको क्या करना है? आप सारी, so there will be 6 possibilities exactly. इसके अलावा और कोई possibility नहीं है, right? We have explored all the parts. Now take the values 1 to 2. 1 to 2 is 10, 1 to 3 is 15, 1 to 4 is 20, 2 to 3 is 9 and 10. 2 to 4 is 10. Then is 3 to 2. 3 to 2 is 13. 3 to 4 is 12. 3 to 4 is 12. 4 to 3 is 9. 4 to 1 is 8. 3 to 1 is 6. 4 to 1 is 8. 2 to 1 is 5. 3 to 1 is 6. 2 to 1 is 5. I'm just taking the cost. उसके बाद आप हर पाथ की कॉस्ट फाइंड कर लोगे and you will end up by getting the minimum value. 2 to 4. 2 to 4 कॉस्ट कितना आ रहा है? That is 10. 4 to 2. 4 to 2 cost is 8. 2 to 3 cost is 9. 3 to 2 cost is 13. 4 to 2 cost is 8. 4 to 3 cost is 9. Can you get the path length? Path length में कुछ नहीं करना, just you have to take the sum. So 10 plus 9, 19 plus 12 is 31 and 39. This is 39. How to determine the possibility if we have large number of nodes? Is there any formula? So there is as such no formula. Formula for finding the number of paths, or you are asking for the minimum path length? किसके लिए पूछ रहे हो आप?
10 plus 10, 20, 29, and 35. This will be returning 35. This is returning 15, 28, 38, and 46. This is 15, 12, 27, and 8, 35, and 40. 1 to 4, 20 plus 8, 28, and 28, and 28, 34, and 43. 29 and 13 is 42 and 47. तो जो आपके पास तीन ऑप्शंस बनी थी उनमें से मिनिमम वैल्यूज हमने फाइंड की थी. मिनिमम फर्स्ट वाले में मिनिमम आया था 35, सेकंड वाले में मिनिमम आया था 40, थर्ड वाले में मिनिमम आया था 43. नंबर ऑफ पार्ट्स, एग्जैक्टली वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्ट्स. आपके पास चार ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4. आप पहली सिलेक्शन किसके लिए कर रहे हो? एनी वर्टेक्स कैन बी द सोर्स वर्टेक्स, यानी कि चार ऑप्शंस अवेलेबल है. तो पहली वर्टेक्स जो आपने विजिट की फर्स्ट नंबर पे, कौन कौन सी वर्टेक्स को विजिट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल द सिटीज आर ए बी सी एंड डी. बेसिकली इट्स द फैक्टोरियल. जब आपको फर्स्ट सिटी को विजिट करना है, अभी तक हमने किसी सिटी को विजिट नहीं किया, इसका मतलब आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल है. सो 4 ways आर देयर टू विजिट द सिटी 1. दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग प्रशांत, कि नंबर ऑफ पाथ्स कैसे फाइंड कर सकते हो. ए बी सी डी किसी भी वर्टेक्स को विजिट कर सकते थे. सो 4 paths आर देयर. सॉरी, फॉर द सोर्स, दिस इज द सोर्स वर्टेक्स. सोर्स वर्टेक्स, तो आपके पास कितनी ऑप्शंस आएंगी? सोर्स वर्टेक्स एक ही है. सो दैट इज ए. वी डोंट हैव एनी चॉइस. सो देयर इज ओनली वन वर्टेक्स फॉर द सोर्स वर्टेक्स. सोर्स कोई भी वर्टेक्स नहीं हो सकता. सिंस दिस वर्टेक्स इज ऑलरेडी टेकन, तो नेक्स्ट ए से आप कितने सिटीज पे जा सकते हो? बी पे जा सकते हो, सी पे जा सकते हो, डी पे जा सकते हो. हाउ मेनी वेज आर देयर टू फिल दिस पोजीशन? देयर आर 3 ways. आफ्टर दैट, इनमें से एक वर्टेक्स आपने विजिट कर लिया, एक और कोई वर्टेक्स चला गया, तीनों में से कोई भी एक वर्टेक्स जाएगा. सेकेंड वन इज सेलेक्टेड, देन वी आर लेफ्ट विद सी और डी, राइट? आई एम एज्यूमिंग कि मैंने यहाँ पे बी लिया है, सो सी और डी. सो दैट मीन्स 2 ways आर देयर टू सेलेक्ट कि थर्ड नंबर पे आपको कौन सा सिटी विजिट करना है. अब इनमें से मान लो मैंने सी को विजिट कर लिया, तो यहाँ पे आपके पास एक ही तरीका बचा. सो टोटल हाउ मेनी पॉसिबल पाथ्स आर देयर? 1 into 3 into 2 into 1. That comes out to be 6. So 6 possibilities are there to select the path. 6 possible paths. इसी तरीके से अगर आपके पास 5 वर्टेक्स होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स वर्टेक्स, आई होप दिस इज क्लियर. सोर्स वर्टेक्स के लिए एक ही तरीके, 5 सिटीज थे, ए बी सी डी ई. इनमें से आपने एक को सेलेक्ट कर लिया, रिमेनिंग ऑप्शन. सेकंड नंबर पे कितने पाथ बनेंगे आपके पास? 4 ways. थर्ड पे 3 ways, 2 ways and 1 way. So it comes out to be 4 into 3 into 2 into 1. So that is nothing but 4 factorial. So 24 ways will be there. 24 paths. तो in general terms हम ये बोल सकते हैं, अगर आपको n verses given है, तो यहाँ पे हमने क्या find किए? 3 factorial. We are finding here 4 factorial. 3 factorial हमने find किया. When number of verses were 4, तो number of paths कितने आ रहे हैं? Number of paths, possible paths are 3 factorial. अगर आपके पास 5 verses है, तो आप जनरल फॉर्मूला बता सकते हो. अगर 5 verses है, number of possible paths will be 4 factorial. Yes? तो अगर आपके पास n verses हैं, total n verses are there in the graph, तो possible paths कितने आएंगे? Possible paths, possible paths कितने आएंगे? अगर n verses हैं, I hope this is not going behind my image. अगर n verses है, how many possible paths are there? If it's clear, you can return the general formula. That's what I'm asking, ma'am. Okay.
So what will be the general formula for n verses? Agar very good. So it is n minus 1 factorial. ये -1 क्यों कर रहे हैं? Because जो first instance पे source vertex लिया है, that is not considered. There is only one option for the source vertex, source एक ही है. Okay? तो जो हमने function calls लिखी हैं, जो हमने question किया था, you can write that in the tabular form. मैंने इस function को जब expand किया तो हम function calls को इस तरीके से लिख सकते हैं. और you can find out the possible paths. यहाँ पे मैंने recursive tree बनाया है, कोई भी path repeat नहीं हो रहा. So we have got the minimum value. So it has calculated all the path lengths and it's returning the minimum value. तो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, you want me to solve that using the recursive tree or by making the function calls. Basically function calls वही आ रही हैं, उतनी ही function calls आ रही हैं, but I guess अगर हम tabular form में लिखते हैं, it is going to take more time because हम function calls की form में लिख रहे हैं, यहाँ पे simply हम values consider कर रहे हैं. Make sense? तो टाइम सेव करने के लिए you can make use of this recursive tree instead of writing the function calls like this. Okay, so next question कहते हैं just by considering the recursive tree. I'm giving you one practice question. Okay, so again you are given with the 4 verses and cost adjacency matrix is given to you. Verses are 1, 2, 3, 4, or let me rename this as A, B, C, D. ताकि numbers और verses में confusion ना हो. Although I'm using the different ink, but still. A, B, C, D. This is given as 0, 5, 10 and 7. 6, 0, 11 and 5. 8, 5, 0, 6. You have to return the shortest path for the traveling salesman problem. And next one is 9, 4, 11 and 0. Let's see how you guys are going to solve it. So what is the easiest approach? You want to solve it? Do you want to return the answer or should I solve it? Okay. तो पहले tree बनाओगे. I'm assuming that A is the source vertex. Okay, start from A. A is the source vertex. Construct a tree starting from A. A से पहले B पे जा सकते हैं और can go to C or can go to D. A से B पे गए, that means remaining verses are C and D. A से C पे गए, that means remaining verses are B and D. अगर A से D पे गए तो remaining verses are B and C. A, B, C is covered. That means next it will be going to D and finally returning back to A. D2,
C returning back to A. B to D returning back to A. D to B returning back to A. B to C returning back to A. C to B returning back to A. Now just substitute the values and calculate the path length. A to B is 5, A to C is 10 and 7. B to C and D is 11 and 5. C to B and D, it's 5 and 6. And D to B and C, that is 4 and 11. C to D is 6. D to C is 11. D to A is 9. C to A is 8. D to A is 9. B to A is 6. C to A is 8. And B to A is 6. Consider these path lengths also. B to D is 5. D to B is 4. B to C is 11. And C to B is 5. बस आपको सम लेना है. So if I'm going to follow this path, इस path में जो भी values आ रही है उनका sum ले लो. 9 plus 6 is 15 and 20, 31. So this is returning 31. Next is 5 plus 5, 10, 21 and 29. Getting 29 here. 5, 10, 20 and 29. Here also we are getting 29. 10 and 6. This is 26. Next, 7 plus 4 plus 11. 11 plus 11, 22. And this is returning 30. And this is returning 7 plus 11 is 18 plus 5. 23 and 29. तो अगर first path की बात करते हैं, we are done. So here the minimum value is, or directly you can check here 31, 29, 29, 26, 30 and 29. So answer is 26. B to C can also be 5. This is B to C. Where is it? B to C आपको 11 given है. B to C cost is given in the question. This will be given to you. This is the cost adjacency matrix. Cost adjacency matrix will be given to you. On the basis of that, we have to discover the shortest path. Please see the matrix. So in matrix, it's B to C is 11. मैं matrix देख कर ही बता रही हूँ. C to B is 5, but B to C is 11. What does it mean? B से C जाने के लिए path length is 11, but C to B is 5. If we will interchange the row and the column, how can you do that? जो भी आपको values question में given होंगी, आपको वही consider करनी है. How will you interchange the value? अब जो path length है, जो cost given है, on what basis you are going to change it? That's not possible, Prashant. आपने सिर्फ पाथ डिस्टिंक्ट पाथ्स आइडेंटिफाई करने हैं. आपने सारे पॉसिबल पाथ्स आइडेंटिफाई किए और उस पाथ में जो भी एजेस आ रही है उनकी कॉस्ट कंसिडर कर ली. कॉस्ट कहां से उठाओगे? फ्रॉम द कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स. दैट्स इट. सो हियर द मिनिमम कॉस्ट इज 26. मेक सेंस? 29. Here we were getting 26 and here again we are getting 29. So we need the previous node like B here. What is wrong with you? I'm taking the अगर A to B वाली edge है, this is A to B edge.
Let me draw the arrows. If you are getting confused, let me put the arrows. So basically A to B is how much? A to B is 5. It's not the previous one. Okay, I guess you are getting confused because I have put the numbers here. आप edges के साथ लिख लो. B to C is 11. This is the path length. This is the length. It's not related to B or C. B to D path length is 5. C to B path length is path length is 5. C to D, this path length is 6. So we are considering the path length. It's not the weight related to any vertex. ये किसी vertex से related नहीं है. D to C, this is 11. आपने देखा होगा यहाँ से C to D, मैंने एज वेट लिया. C to D के लिए वैल्यू क्या है? 6. D to C के लिए D to C, it is 11. You get it? बच्चे कॉस्ट किसी वर्टेक्स के लिए नहीं है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ द एज. यहाँ पे मैंने इनफैक्ट रेफरेंसलेशन में भी लिखा है, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम एस टू के, तो ये कॉस्ट आप कब ले सकते हो? जब एस और के बीच में एज आ रही है. दैट्स द एज वेट. ओके, so I guess this recursive tree method saves your time. Time bacha. Obviously, nobody is gonna give you question with 5 verses, because 5 verses means 4 factorial. These many parts you won't be able to calculate in the exam. So maximum आपके पास 4 vertex तक जाएगा, and in the 4 vertex, these will be the paths. You can see it won't be taking even 2 minutes. जब आपकी practice हो जाएगी, you learn that how to read the values from the cost edges and symmetrics. Quickly you can use the values. Okay. Any other query? So this is all about traveling salesman problem. I'll be sharing this PDF in another 5 minutes in the Telegram group, that is Shefali ma'am Testbook. So you guys can check the PDF in the group. अगर आप लोगों ने join नहीं किए तो join कर लो. Link is given in the description box. And I can see that there are no responses in the group. So please participate in the group discussions. Post your doubts. Try to answer the doubts which are asked by other students in the group. So this will help you to clear your concepts. You can directly interact with me. You can participate in the quiz and the poll. Prashant, I have already shared the previous class PDF. It's there in the Telegram group. Just check it out. It's already shared. Now I'm going to share my screen so that you can understand where is this link available. And I have seen बहुत सारे students है यार वीडियो लाइक ही नहीं करते. अगर आपको कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए. सो I'll expect कि at least you can like the video. Okay, so first link is for the master class. मास्टर क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं. सो यू कैन फॉलो दिस लिंक टू फॉलो द सेशन. और अगर आपका पिछला कोई भी सेशन जाता है, कुछ सेशन मिस हो गए, तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो. यू कैन सी हियर 01 knapsack problem is available. So this session took place 2 days. So recording of each and every session is available. Next one is second link is for the NIC SuperCoaching. This is specifically a course designed for the students, those who are targeting on NIC exam. Third link is the link for the Telegram group. So this is the Telegram group. You can use it. And if you want to cover the 100% syllabus in detail, like we are doing in the YouTube sessions, obviously 100% syllabus completion is not possible on YouTube. So for that, you can opt for super coaching, because in super coaching, we have the recorded sessions, we have the live sessions, practice questions, test series, study notes. Each and every single thing is included in the super coaching. You can have the look over the profile of the super teachers, demo classes, live series, test series. Live series में सिर्फ और सिर्फ जो sessions होंगे, those will be on the quick revision of the topics, as well as डाउट सॉल्विंग एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन लाइव सेशंस में होगी. 100% कंप्लीशन होगी. मास्टर क्लास में सारे 100% क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे. ओके, सो
For recorded sessions, there are multiple courses available. If I'll go to full course, you can see here we have full course by Git Forum, by Digimento, by Nimbus Learning, and by Testbook itself by me and my team. So under this, we have 250 videos which are in the English language, combination of Hindi and English. तो सारे सेशंस की आपको वीडियोस मिलेंगी and these sessions are explaining the concepts in detail along with the sufficient number of examples. Okay, enough number of practice questions are discussed in each and every session. Apart from the recorded sessions, live series hai, and the study notes. If I go to the study notes, under the study notes, we have the complete detailed notes for engineering mathematics, general aptitude, formula notes, and the डिटेल नोट्स. अगर कंप्यूटर साइंस के डिटेल नोट्स में जाते हैं तो यू कैन सी जितने भी कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वी हैव द नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्मेट. प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर में आपको 5 पीडीएफ नोट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी. सो दैट मीन्स फॉर ईच एंड एवरी यूनिट वी हैव वन पीडीएफ. And for computer networks, obviously 10 chapters are not there, but yeah, each layer is kind of bit lengthy, so that's why we have divided this into the small parts ताकि आप इस तरीके से prepare कर पाओ. And apart from that, in the formula notes, we have just one PDF for each and every subject. क्योंकि formula notes में it includes only the important set of formulas and the important concepts, not everything. And in the detail notes, each and every concept is discussed in detail. लाइव सेशंस में आपके पास रिकॉर्डेड सेशंस में वीडियो लेक्चर्स है, और वही सेम चीज जो भी सेशंस में डिस्कस हुए वो सारी की सारी चीज आपको रिटन फॉर्मेट में भी मिल रही है ताकि आपको नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट ना करना पड़े. Okay, you'll get all these benefits under the super coaching. So there are 4 plans for the super coaching: 9-month plan, 12-month plan, 24-month plan, 2-year plan, and 3-year plan. So those who are targeting on GATE 2024, I'll suggest you to go for 9-month plan क्योंकि almost 8 to 9 months ही बाकी है. So this is for 11,249. If you're going for 1-year plan, I don't recommend you to go for 1-year plan. अगर आप 4th year में हो and you are targeting on 2024, then go for 9-month plan. If you are in the 3rd year or 2nd year, then I'll suggest you to go for 24, or that is 2-year or 3-year plan. You can see that this is more cost effective, right? तो इससे क्या होगा, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, बिकॉज गेट में सारे के सारे कोर टेक्निकल सब्जेक्ट वही है जो आप 2nd ईयर और 3rd ईयर, दैट मीन्स 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर में पढ़ते हो. So this way you can prepare for your semester exams. Moreover, you'll get sufficient time to go through the textbooks. Apart from that, you can explore more number of questions. Okay, practice के लिए ज़्यादा time मिल जाएगा. So it's always good to start with the preparation as early as possible. If you want to get these subscriptions at the discounted price, so you have to apply here the coupon code. Coupon code is given in the description box. You can see here some coupon is applied. Just remove it and use the coupon code which is given in the description box, which is Shefali. S, all the letters should be in the capital. तो क्योंकि यहाँ पे मैंने link follow किया है, so if you are going to follow the link, then it will automatically show you the discounted price. So I'm again going back to the description of the video. So here it is provided. Use the code. Code is Shefali S. Okay. Anyone having any doubt? So this is all from my side. Now I'm going to discuss the schedule of the upcoming sessions. There is one announcement for you guys. So today we'll not be having the master class. Next master class will be on Monday. I hope आपकी स्क्रीन पे भी हम मेन स्लाइड पे आगे होंगे. So next application that we'll be covering is the multi-stage graph. This will be the last application from dynamic programming. After that, I'll discuss the concept of hashing. So if I talk about the schedule of the live sessions, so Monday to Friday, we are planned that we'll be taking 2 sessions per day. One will be from 4 p.m. to 5 p.m. This is just 1 hour session on YouTube, in which we'll be covering the concepts of the GATE syllabus as well as the topics from the ISRO concepts.
So abhi initially I'm just taking the concepts which are common for GATE aspirants and ISRO so that ISRO को भी benefit मिले. And next one is 8 p.m. to 8:30 p.m. That is a master class. क्योंकि जब हम concepts learn करते हैं तो obviously we need some practice session. So in the practice session प्रैक्टिस भी हो जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो जाए तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ विच आर आस्क्ड ऑन द गेट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ एंड सैटरडे एंड संडे वी हैव द इसरो सेशन PYQ session and marathon. But this weekend, it's not planned. So this weekend there will be no session. Okay. So those who are preparing for ISRO, जिन्होंने ISRO का form भरा है, बच्चे don't miss these two sessions because this will be helping you a lot in cracking in the preparation of your ISRO exam. ओके और जो गेट एस्पिरेंट्स है वो इसरो के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट द सिलेबस इज सेम सिर्फ दो सब्जेक्ट्स है जो डिफरेंट है यू कैन जस्ट गेट द क्वेश्चंस फ्रॉम दोस टू सब्जेक्ट्स वन इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अदर वन इज द वेब टेक्नोलॉजीज इनको छोड़ दो बल्कि इसरो में भी इसकी वेटेज बहुत कम है सो आई सजेस्ट यू टू कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ गेट फर्स्ट इफ इवन इफ यू आर टारगेटिंग ऑन द इसरो एग्जाम. Okay, so this is the agenda for the next session, which will be on Monday. So a final note here is today there will be no master class. Okay, master classes are free, guys. These are on the Testbook platform, but for this you need not to have any subscription. Anyone can join these sessions. Today there will be no master class, and on this weekend there will be no session. वीकेंड पे कोई सेशन नहीं है नो इसरो सेशन एंड नो गेट सेशन सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन नेक्स्ट लाइव सेशन रिकॉर्डेड सेशंस आप कभी भी देख सकते हो मास्टर क्लासेस भी और यूट्यूब सेशंस भी सो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन मंडे सो आई विल सी यू गाइज ऑन मंडे एट 4 p.m. in the YouTube session with the next application last application from dynamic programming. Okay, is there any doubt or query? I guess there was no doubt. तो आज वाला सेशन यही खत्म करते हैं. Thank you so much, guys. God bless you. I'll see you on Monday. Bye bye. Take care.